अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज MCQs ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो SS और इंग्लिश लेक्चरशिप के लिए जो बहुत ही अहम क्वेश्चन है वो सीखेंगे इंशाल्लाह, और ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल होंगे। जॉन वाइक्लिफ was the first to render the Bible into English in 1380। जॉन वैक्लिफ ने सबसे पहले बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था 1380 में। द पेयर्स ऑफ प्लोमैन इज़ अ सीरीज ऑफ विजन्स सीन बाय इट्स ऑथर लैंगलेट। विलियम लैंगलेट जो इसका ऑथर था पेयर्स प्लोमैन का, द विजन ऑफ द फील्ड फुल ऑफ फॉक्स एंड वॉज द फर्स्ट विजन दैट ही सॉ। मतलब ये इसने पहला जो है एक ख्वाब देखा था, उस ख्वाब को इसने डिस्क्राइब किया है पेयर्स द प्लोमैन। हॉक्लेव, इसको हम हॉक्लेव भी कहते हैं, थॉमस हॉक्लेव, ये एक बहुत ही 15th सेंचुरी का मशहूर राइटर था। इसका जो फेमस वर्क था, इन द गवर्नल ऑफ द प्रिंस रोट अ फेमस पोइम मॉर्निंग द डेथ ऑफ चॉसर। मतलब चासर की जो डेथ पर उसने एक मॉर्निंग पोइम लिखी थी, दुख भरी, वो पोइम थी गवर्नल ऑफ फ्रांस। कैक्सटन was the first to set up the printing press in England in 1476। कैक्सटन जो था उसने सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस मशीन 1476 में सेटअप की थी। विलियम टिंडाले, इंग्लिश न्यू टेस्टामेंट इज़ द अर्लीस्ट वर्जन ऑफ द बाइबल। विलियम टिंडाले को हम इंग्लिश लिंग्विस्ट भी है और स्कॉलर भी था। उसके बाद है टोटल्स मैसिलेनी इज़ द फेमस एंथोलॉजी ऑफ अ सॉन्ग एंड सोनेट बाय वेयॉट एंड द अर्ल ऑफ सरे। एमोरिटी contain 88 sonnet of Spenser। Thomas More's Utopia was the first written in Latin in 1516 and it was rendered into English 1551। Doister is believed to be the first regular comedy in English by Nicholas Udall। निकोलस यूडाल ने सबसे पहले जो है कॉमेडी इंग्लिश में लिखी थी जिसका नाम था रोइस्टर डोइस्टर। गोरबोडक is believed to be the first regular tragedy in English by Sackville and Norton in collaboration। सैकवाइल और नॉर्टन ने सबसे पहले जो है इंग्लिश ट्रेजेडी लिखी थी जिसका नाम था गोरबोडक। Chaucer's physicians in the Doctor of Physic was heavily dependent upon astrology। Spencer described Chaucer as the well of English under फाइल्ड। मतलब स्पेंसर ने चासर को कहा कि एक इंग्लिश का कुआं जो ज़मीन के अंदर था। चासर्स pilgrims goes on their pilgrimage in the month of April। Forest of Arden appears in the play As You Like It by the William Shakespeare। विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है As You Like It, उसमें ये फॉरेस्ट ऑफ आर्डन बैनिश्ड मैन करेक्टर है। ग्लोब थिएटर वाज बिल्ट इन 1599। ये ग्लोब थिएटर था जो 1899 में बना था। एस्ट्रोफैल, a pastoral elegy upon the death of the most noble and valorous knight Sir Philip Sidney, ये एक पोइट भी था, is a poem by the English poet Edmund Spenser। Spenser Epithalamion
इज़ अ वेडिंग हिम। ये वेडिंग हिम है जो शादी के टाइम पर गीत जो गाए जाते हैं उसे कहते हैं। द फर्स्ट ट्रेजिडी गोरबोडक वाज अ लेटर टाइटल एज अ फॉरेक्स एंड पोरेक्स। गोरबोडक को बाद में फॉरेक्स एंड पोरेक्स के नाम से जाना गया। सिडनीज एपोलॉजी फॉर अ पोइट्री इज़ अ रिप्लाई ऑफ गोसन्स स्कूल्स ऑफ अब्यूज़। गोसन का वर्क था एक स्कूल ऑफ अब्यूज़, उसके रिप्लाई में इसने सिडनी ने एक पोइम लिखी थी जिसका नाम था एपोलॉजी फॉर पोइट्री। इन द एपोलॉजी फॉर पोइट्री सिडनीज डिफेंड्स द थ्री ड्रामेटिक यूनिटी। क्रिस्टोफर मार्लो wrote only tragedies and he was first to use blank verse in his Jaff Malta. Jaff Malta इसकी ट्रेजिडी है, इसमें पहली बार इसने ब्लैंक वर्ब यूज़ किया था और इसीलिए इसे हम फादर ऑफ ब्लैंक वर्ब भी कह सकते हैं। Was the fast that launched 1,000 ship. This line occurs in Dr. Foster's by Marlowe. Ben Jonson used the phrase Marlowe's mighty line for the Marlowe's blank verse. Ruskin said Shakespeare has only heroines, no heroes. रस्किन एक क्रिटिक था जिसने शेक्सपियर के जो भी सारे ड्रामे थे उसमें कहा है कि शेक्सपियर के ड्रामों में सिर्फ हीरोइन ही है, नो हीरो। द फ्रेज ऑफ द माउस ट्रैप यूज्ड बाय द शेक्सपियर इन हैमलेट एंड इज अ प्ले विद इन द प्ले। स्पेंसर डेडिकेट द प्रीफेस टू फेरी क्वीन टू सर वॉल्टर रैली। The Fairy Queen is an allegory. In this, Queen Elizabeth is allegorized through the character of Glorina. Charles Lamb called the Spenser the poets of poets. Charles Lamb, one of the critic of the modern critic, जिसने स्पेंसर को poets of poets मीन शायरों का शायर का तखल्लुस दिया। Spenser first used the Spensian stanza in Fairy Queen. 12 cantos are there in Book 1 of the Fairy Queen. In the dedicatory letter, Spenser says that the real beginning of the allegory in the Fairy Queen is to be found in Book 12. The Fairy Queen is basically a moral allegory. Spenser derived this concept of the moral allegory from Aristotle. एरिस्टोटल का वर्क था, उसमें से ही इसने ये moral allegory का concept लिया था। Ben Jonson said Spenser write no language. Ben Jonson एक modern dramatist भी था और एक critic भी था जिसने कहा कि स्पेंसर ने कोई language नहीं लिखी। Spenser divided his shepherdess calendar into 12 ecologies and they represent 12 month of the year. इसने 12 ecologies लिखी थी, वो 12 month of the year को represent करती है। Bacon essay और the modeled on the essay of Mundine, जिससे ये इंस्पायर हुआ था, ये one of the father of essays, essay का father कहा जाता है और Bacon को जो है modern father of essay कहा जाता है। Bacon is author of Novel Organon. Spenser dedicated his shepherdess calendar to Sir Philip Sidney. 10 essays were published in Bacon's first editions of the essay 1597. 58 essays of Bacon were published in his third and the last edition of the essay 1625. Blank, a mixture of a falsehood, is a likely alloy in a coin of the gold and silver, which may make the metal work the better, but it embased it. These lines occur in the Bacon's of Truth. ये बेकन का ऑफ ट्रूथ ऐसे है जिसमें ये लाइंस जो है ली गई हैं। Hamlet said, "Frailty, the name is woman," in Hamlet by the Shakespeare. Life is a tale told by an idiot.
and the full of sound and fury, signifying nothing. And these lines occur in the Macbeth by the Shakespeare. The lunatic, the lover, and the poet are the imagination all compact. And these lines occur in the Midsummer Night Dream. Neither or neither, a borrower nor a lender be. These lines was told by the Polonius in Hamlet. Ad hominem is a Latin word which means against man. In writing or the speech, the deliberate repetitions of the first part of the sentence in order to achieve an artistic effect is known as anaphora. Percy Bysshe Shelley, English romantic poet, Witch of Atlas, is a famous poem that is full of example of alliteration. Percy Bysshe Shelley की एक रोमांटिक इंग्लिश पोएट है जिसका एक पोएम है द विच ऑफ एटलास जो एलिट्रेशन में लिखी गई है. Ode on Aggression, earned by one of the most famous poet of romantic era, Keats, is an example of metaphor. Dash is a figure of speech which represents the shortly story, typically with a moral lesson at the end. Fable. Parable भी कहते हैं हम इसे. Dash is derived from the Latin litera. It means the letter of alphabet, alliteration. The web struck the stone. यहाँ पर sound जो है represent हो रहा है. तो यहाँ पर इस लाइन में, इस सेंटेंस में onomatopoeia का एग्जाम्पल है. Dash is formed by using exactly the same letter of the original word but a different arrangement. For example, the letter of the word Shakespeare can be rearranged from a word is Casha Reeves is anagram. He kills to avenge his father's murder. He is a good because he wants to protect his mother. He is bad because he is willing to kill whom he must to achieve this end. Above lines or from the Hamlet show the best example of soliloquy. ये शेक्सपियर के हैमलेट में soliloquy, शेक्सपियर ने 7 soliloquies इस्तेमाल की हैं जिसमें कोई मरा हुआ आदमी बात करे तो रियल कैरेक्टरिज्म को जाहिर कर रहा है. Dash is a figure of speech in which abstract idea and the principle are described in terms of the character, figure and the event. Allegory. Ben Jonson was the first writer to introduce the term in the middle of the 17th century, and which of the following figure of paradox. Dash is a brief and indirect reference to the person, place, things, idea, historical, cultural, literary, and political significance, illusion. Dash is a figure of speech in which two opposite ideas are joined to create the fact, oxymoron. The shadow of the moon danced on the lake is example of personification. Personification में क्या होता है कि जब नॉन लिविंग थिंग्स डज द वर्क ऑफ लिविंग थिंग्स, तो डांस जो है लिविंग थिंग ही करती है. यहाँ पर शेडो ऑफ द मून जो क्या है इनएनिमेटेड थिंग्स है. द 12th नाइट बाय द विलियम शेक्सपियर. इफ द म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, गिव मी एक्सेस ऑफ इट दैट surfeiting. The appetite may sicken and do die, so die, that strain again, it had a dying fall. Oh, it came over my ear like the sweet song. This experts has been written in iambic pentameter. Dash is a literary term used to describe the event that make up the story, main part of the story plot. In literature, dash is a character that shows the qualities that are in the contrast with the quality of the another character, foil.
In original scheme of the plan, the Fairy Queen as designed by the Shakespeare, it was to be completed in the 12th book, but it could not complete the whole plan. Only 6 books exist.